Assalamu alaikum. Uh, Today our topic is TNT waste. What are TNT waste? So basically TNT it is an abbreviation of the word trinitrotoluene. It may also be called as 2,4,6 trinitrotoluene. When it comes to the matter of their appearance, they are yellow in color. They are odorless solid. They are not synthetic in nature. They are basically synthetic in nature. They are not. They do not occur naturally. इनको जो है वो हम लोग लेबोरेटरी में या इनको इंडस्ट्री में हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ये कुदरती तौर पर या नेचुरली एग्जिस्ट या नेचुरली तौर पर अकर नहीं करते हैं। दे आर हाईली एक्सप्लोसिव. When I use the term high explosive, we must be able to differentiate between the two terms high explosive and low explosive. High explosive are those explosive when they exploit their speed is more than 1,000 meters per second, while low explosive are those when they exploit their speed is less than 1,000 meters per second. TNT, they lie in the category of high explosive, so we can imagine that how much explosive they are. As I have already said that they are explosive, it means that they are used in military shells, bombs, grenades, यानी दस्ती बम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, industrial uses, and moreover they are used for the underwater blasting purposes. The second thing is all about their history, their mild background. Initially, a German chemist, Julius Wilbrand, here we can see the picture as well. In 1863, he firstly prepared TNT. After that, in 1891, Carl Husermann, we can also see picture here, he characterized the explosive feature of TNT. ये बात नहीं थी कि उसने 1863 से लेकर 1891 तक कोई काम नहीं हुआ. People worked on it, but the thing was that people were unable to differentiate or to characterize its explosive feature. Like for example, some article write that scientists, they started to work on it. They used to make their isomer like 2,5,6 trinitrotoluene. We know that if the structural formula of a thing is changed, the physical and chemical property get also changed. So that's why they cannot identify, they cannot characterize the explosive feature of TNT. But after that, in 1891, Carl Husermann did it in so well manner. In 1902, so before proceeding further, I would really love to tell you about in 1863, Julius Wilbrand, who initially prepared TNT, he used it as a dye. It was used as a dye at that time. After that, in 1902, German armed forces adopted it as a filling for artillery shells. We know that this is the time of World War I and World War II. So German, they were more eager to use it for their military purposes, for their war purposes. And after that, 1907, British, they started to replace the Lodite with TNT. Here, Lodite is simply the word. यहाँ पे just एक अल्फाज के तौर पे इस्तेमाल किया गया है. Lodite is basically itself a huge term. It is an umbrella term in a sense that कि लॉर्डाइट उन लोगों को कहा जाता है या उस कम्युनिटी के लोगों को कहा जाता है कि जो which are actually against the new technology, which oppose every new technology. We know that industrialization, we are living in post-modernized era. We know that industrialization does come and did come, and it was followed by the modernization did come. It was followed by the industrialization. Sorry for the misstating that. So when industrialization was there, the Luddite, who were the follower of the great Laudner, who they were in confusion that the new technology is bringing the poverty, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इश्यूज एंड मल्टीपल अदर थिंग. इनका ये कहना था कि जो नई आने वाली टेक्नोलॉजी है ये हमारे अंदर या हमारी कम्युनिटी के इन पूरी कम्युनिटी का ये मानना था कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है ये गुर्बत, बेरोजगारी, उसके अलावा बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, ये सारे किस्म की चीजें हैं वो क्रिएट कर रही है. इनका ये मानना था. But after that, they started to, increasing their protest. इनका प्रोटेस्ट जब बढ़ता गया तो ब्रिटिश बेस्ड क्योंकि ये लोग थे, इन्होंने जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज को भी जलाया अपनी बात को मनवाने के लिए या अपनी बात को करने के लिए कि हमारी बात को सुना जाए. इन्होंने जो है बहुत सारे प्रोटेस्ट किए. इवन इन्होंने जो है वो डेथ थ्रेट्स भी भेजे. और आफ्टर दैट इनको जो है जब इनका प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता गया एंड जब एक चीज अपनी लिमिट क्रॉस कर जाती है,
The British forces do what? They basically did the very bold decision they have taken. They had taken the very bold decision in the sense that they direct shoot that people. They उनको उन्होंने जिला वतन कर दिया और इस तरह से मल्टीपल उनको पनिशमेंट्स दी जिसकी वजह से इनका जो है वो इनकी जो कम्युनिटी है वो सप्रेस है. So basically TNT was a new technology in British. Lodite was replaced by TNT in 1907. So what they really want to say in this line, वो ये पूरी की पूरी चीज है. After that, we will be able to discuss about its properties. The chemical formula is C7H5N3O6. Their molar mass is 227.13. 2 gram per mole. Their appearance is pale yellow. I have already discussed about it. Then their density is 1.654 gram per cubic centimeter. Melting point is 80.35 degrees Celsius. Their boiling point is 240 degrees Celsius. Solubility in water is 0.13 gram per liter at 20 degrees Celsius. Their solubility is in ether, acetone, and benzene. They are soluble in 3 things. Here you can see the picture. These are the chunks of TNT, and at 81 degrees Celsius, they start to melt. It is the visual representation of TNT. After that, here you can also see another picture where TNT, it is used as an explosive material by the military people, and when it gets exploited, it gives such visual representation. Okay, now the third thing is how we can prepare the TNT. What is the procedure? As I have already interpreted that they are synthetic in nature, the person who made it was used as a dye at that time. It is not the thing that occurred naturally. Okay, so it is actually a thing that is made by a person. It is synthetic in nature. There are just 2 purposes that we can make the TNT. There is industrial method and there is a laboratory method. They follow the same process in industry and in laboratory. We have the same method. But again, there is a variation in temperature. We know that in laboratory, it is a small scale. It is a very minor, precise. We just have to, take a few steps to do it. But in laboratory, it is a very big thing. So there is a temperature variation. But again, the code is the same. What we have to do to prepare the TNT, here we can see the picture. There's a flow sheet, we can say. There is basically 3 major steps to prepare the TNT. Number 1, toluene is there. Here there is a benzene ring. Methyl group is attached. Here me is the methyl group, that is representation of the methyl. The toluene, then methyl group attached with the benzene ring, a complete benzene ring, it is called as the methyl. Methyl, when it is treated with mixture of sulfuric acid and nitric acid, it gets converted into MNT, that is mononitrotoluene. And the second step, it is renitrated with the nitric acid, it gets converted into dinitrotoluene, and then after that it is also treated with the nitric acid. It just thirdly it gets converted into 2,4,6 trinitrotoluene, and we also get the oleum as a result. Okay, the thirdly there comes the fourthly there comes the toxicity. Toxicity, how much toxic they are, what cause of problem, what type of problem they are causing, what are the causes. So we here will discuss about everything about that. They are poisonous, they can cause skin irritation. Obviously, they are explosive. This is an understood thing that they are explosive and they are ultimately affecting the human. They are human-based thing and they are affecting the human in return. So yes, we have to use it, but we cannot use it in so much excess amount. They're also used in mining purposes, but there are also the math effect that are also called as the side effect. They are poisonous for sure because they are TNT. They cause the skin irritation. They causes the skin to turn bright yellow, orange color. Let me tell you one thing here. They cause the anemia. In third line, we can say that people experience anemia. There is abnormal liver functioning. So what happens basically, there is a hemoglobin, the TNT get attached to that, it just block that site. In liver, where there is the maturation of the RBCs and 120 day cycle, it runs in the liver. So they do what? They just
dismorph the whole function. So liver get totally affected by the binding of the TNT with that. So they are that much level effective, they are that much level poisonous. So there is spleen enlargement. We know that if one part of the body is, if the even the one system of the body is get dysfunction or get interrupted, the whole chain of the processes get ultimately get interrupted, get a dysfunction, and there is, because they are interconnected with each other. So spleen enlargement is there. There is anemia. There is a ultimately when there is anemia, we know that there is also the changing of the color of the eyes. It also changes the color of the skin. Adversely affect, and male fertility is also there. They affect the male fertility, and they call it a red urinary humor. So these are the symptoms of that. Here we can see the visual representation of that. The normal liver, we can see the picture of the normal liver. This is the this is not the normal. This is the affected TNT affected liver. Here we can see it is a place where a spleen is present. There is a spleen enlargement. Okay, what are the ecological impact? How much affecting they are, and which type of things they are creating in our environment, in our daily life. So how much effective or impactive they are. Firstly, they are widely used in explosive. I have already said about ये explosive में धमाका खेज मवाद में इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. Obviously, जब ये धमाका खेज मवाद इनको इस्तेमाल किया जाता है, मैंने जैसे पहले बताया अंडर वाटर ब्लास्टिंग के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है. फॉर श्योर अंडर वाटर ब्लास्टिंग के लिए इनको इस्तेमाल किया जाएगा. ये जो है वो हमारे वाटर की जितनी भी एक्वेटिक बॉडीज हैं उनको पोल्यूट करेंगी. आफ्टर दैट इनको माइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये हमारी सोइल को अफेक्ट कर रही हैं. उसके अलावा इनको वॉर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. ये हमारे एटमोसफेयर को अफेक्ट कर रही हैं, और इन सबको मिलाने के साथ साथ ये हमारे सबसे हाईएस्ट लेवल जो कि बायोस्फीयर है उसको अफेक्ट कर रही हैं. फिर आ जाती है जिसकी कंसंट्रेशन की बात. The concentration of TNT is contaminated soil can reach 50 gram per kg of soil, where the highest concentration can be found on or near the surface. One interesting thing is about to next. In 2001, US EPA, United States Environmental Protection Agency, they declared that TNT is a pollutant, and our first priority is to remove the TNT from our environment because they are affecting each and every person. So you can guess from this fact that how much effective they are, how much dangerous impact they are creating on human. Here is the flow sheet, is a you can say a picture which is telling us about the TNT, how TNT works, how TNT is polluting our environment. Firstly, we did what? It is a site of explosion. We have we have exploited, the explosive TNT is there. After explosion, there is a greenery, there are trees, there is building, suppose the explosion is there. After explosion, what are the mass effects? What are the side effects, after effects? Site of blast, there is nothing but a deserted and desolate area. Harmful effect on plant growth. Obviously, there is a greenery, there is not, I have said that there is a deserted and desolated area would be there. Because once you are seeing the greenery, and at the other time you are seeing that there is nothing, because it is a wholesome process that is affecting our biosphere, atmosphere, our soil, our temperature, each and everything. So after that, when TNT is getting into the water bodies, it is ultimately affecting the water bodies, and when human consume that water, it is getting into the body. Not only it is affecting the human, but also the aquatic life. Okay, what is pink water and the red water? In the process, in the washing process of demilitarization operations, the water that is produced is called as a pink water. और जब ये अपना एट द टाइम ऑफ जनरेशन ये जो है वो कलरलेस होता है. आफ्टर दैट ये जो है वो पिंक वाटर बनता है. फिर आता है हमारे पास TNT. जब हमारे पास क्रूड TNT की प्यूरिफिकेशन हो रही होती है, उस पूरे प्रोसेस के दरमियान जो वाटर है उसको हम नाम देते हैं रेड वाटर का.
ये जो होता है ये कलरलेस भी हो सकता है, ये पेल रेड भी हो सकता है. It all depends upon the that very stuff, whatever we are doing. Bioremediation, what role the bioremediation can play uh, in the whole process? Bioremediation by microorganism. Number one, there comes the bacteria. Bacteria. The species that we are using are Pseudomonas species, Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas aeruginosa. Then there comes the Bacillus species. We can also see the pictures rightly here. Bacillus thuringiensis, Bacillus megatrium, and they all were the bacterial species that we can use for the process of bioremediation of the TNT. Then there come the fungi. In fungi there come the phanerocheet, क्रायोस्पोरियम, व्हाइट रोड फंगस. इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर जो है वो लिग्नैनोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जिसके अंदर लिग्निन परऑक्सीडेज पाया जाता है और मैंगनीज परऑक्सीडेज पाया जाता है. वो क्या करते हैं कि वो टीएनटी को वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और उसके अलावा टीएनटी को डिग्रेड कर सकते हैं. सो दे आर द बेस्ट थिंग टू बी डन. वी कैन यूज द फंजाई फॉर दैट पर्सपेक्टिव. वी कैन, इफ वी हैव द प्रॉब्लम, वी हैव द रेमिडिएशन ऑफ दैट थिंग एज वेल. So by using fungi, by using bacteria, we can do such thing because they are ultimately degrading everything. The trimates versicolor. They're also white rot fungus. They are called as a turkey tail. और ये क्या होता है कि लिग्निन मॉडिफाइंग एंजाइम होता है, इनके अंदर भी लिग्निन पेरोक्सीडेज पाया जाता है और उसके साथ साथ लिकेसिस एंजाइम पाया जाता है. ये क्या करते हैं? दे आर डूइंग द सेम थिंग एज अर्लियर. दे आर ऑक्सीडाइजिंग एंड दे आर ट्रांसफॉर्म द टीएनटी इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस. So how much mechanism are involved? We know that there are two mechanisms, aerobic and anaerobic, where oxygen is present and secondly, where oxygen is absent, respectively. The whole process is all about the enzymatic breakdown. What the thing here is, certain bacteria and fungi can they produce the enzyme. जैसे हमारे पास ऑक्सीजनेज हो गया, नाइट्रोरिडक्टेज हो गया, ये जितने भी एंजाइम है ये बनते हैं और ये क्या करते हैं कि टीएनटी को जो है वो डिग्रेड कर देते हैं लेस टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर. फिर होती है हमारे पास रिंग क्लेवेज. एंजाइमेटिक रिएक्शन टेक प्लेस होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा, हमारे पास जो है वो रिंग क्लेवेज हो जाएगी. एंजाइम आए, उन्होंने रिएक्ट किया और वो एंजाइमेटिक क्लेवेज हो गई, जो है जिसको हम नाम देते हैं कि रिंग क्लेवेज. वी नो दैट कि हमारे पास जो टोलुइन है, जो हमारे पास हमारे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलीन है, it is a it consists of the a ring. There is a benzene ring. So firstly there is the cleavage that is called as the ring cleavage with the process of enzymatic reaction. फिर क्या होता है कि टीएनटी का सबसे पहले रिंग क्लीवेज होगी, फिर टीएनटी का जो रिंग एरोमेटिक स्ट्रक्चर है वो होगा, और जब वो टूट जाएगा वो फर्दर सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाएगा. यानी वो कॉम्प्लेक्स था पहले, फिर वो चेंज हो जाएगा सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर. फिर हमारे पास दूसरा स्टेप होता है जिस कंप्लीट मिनरलाइजेशन, जिसके अंदर फर्दर ब्रेक डाउन होती है, ये CO2 H2 के अंदर कन्वर्ट होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होते हैं. कहने का मकसद ये है कि इनके अंदर सबके अंदर एक ही प्रोसेस हो रहा है. वो ये हो रहा है कि इनके अंदर जो हमारे पास है जितना भी टीएनटी है वो डिग्रेड मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो रही है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था जो कि ज्यादा एक्सप्लोसिव था, ज्यादा डेंजरस था, ज्यादा पॉइजनस था, वो लेस जो है वो चीजों में कन्वर्ट हो रहा है, लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है. दैट इज अल्टीमेटली गेटिंग इनटू डेफिनेशन ऑफ बायोरेमिडिएशन. तो इन सब का जो है दे आर फॉलोइंग द सेम ट्रेंड, दे आर डूइंग द सेम स्टफ, whether it comes aerobic and anaerobic. What is in situ or ex situ bioremediation? In situ, the place specific substance, the place specific process, and ex situ, that is not the place specific. We can do it at anywhere. In situ is there. In situ bioremediation, what we have to do, the biological treatments are being done. Typically, the underground, the contaminated substances, they are treated with so many biological stuff, and then they are finally converted into less toxic substances.
So this is all about the in situ. Example included the phytoremediation, natural attenuation. Secondly, there comes the ex situ bioremediation. It is the process where soil or water, contaminated soil or water. We know that with TNT के हमारे पास जो TNT होता है उससे soil और water सारे बहुत सारा affect होते हैं. इनमें अंदर क्या होता है कि contaminated soil और water को remove, इनके अंदर contaminated soil या water को remove कर दिया जाता है. इधर भी biological organism को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि that is not the space specific. Example include the biological composting and biopiling. What is biological composting? इसके अंदर क्या होता है? It is very rich phenomena. It is an umbrella term. It is a basically natural process कि जिसके अंदर हमारे पास organic material जैसे food हो गया, waste हो गया, या trimmings हो गई, biodegradable substances हो गए, उनको जो है वो हमारे पास nutrient rich soil amendment के अंदर change कर दिया जाता है. और वो जो nutrient rich soil amendment होगी, जो कि change form में होगी, उसको हम नाम देते हैं compost का. हम इस कंपोस्ट को यूटिलाइज करते हुए हम लोग जो है वो डिग्रेडेशन का प्रोसेस कर सकते हैं. हम बहुत सारे एक मल्टीपल टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स को जो है वो उसकी ब्रेक डाउन कर सकते हैं और उसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. और ये जितना भी प्रोसेस है, हम जानते हैं कोई ना कोई, अगर हम टैक्टिक या टेक्निक कर रहे हैं और हम जानते हैं कि इसके अंदर सर्विलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके अंदर मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और साथ साथ हमने इन चीजों को भी देखना होता है कि हाउ मच conservative they are in nature, how much friendly they are in nature, how much they are less, how much less pollutic you can say in nature, कि कितने कम pollution वो जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, कितना कम हमारे माहौल को कितना कम जो है वो आलूदा कर रहे हैं. So basically, biological compositing is a process that is natural process, and they are environmental friendly. They remediate the polluted side, and the best thing about them is that they restore the natural balance. That is the most precise thing about that. Here is a visual representation. It is the organic waste. Compositing is being done. Compost is there. That is the oil-rich, nutrient-rich soil amendment. It is implemented over here. Here is the soil and compost. It is poured over the soil. Mineralization is being done. Inorganic nutrients, the leaching and the crop uptake is there. So by the process of enzymatic activities and biological processes, they just convert the TNT into less toxic substances. As I have already said about that, when we are doing any tactic, there is any technique we are doing, any remediation that we are doing, must be there are some things that we have to take side by side. That must be in a process where we can conduct the things side by side. There is a proper monitoring system. So by in biological compositing process, there is firstly the selection of compositing material. Plant matter, animal manure, specific organic water streams, residue, agricultural residue, etc., etc. These organic waste must be included when it comes a matter of selection of compositing material. Then there are proper conditions of the optimization of compositing. We must be able to take under consideration the temperature, moisture content, pH, oxygen availability, etc., etc. All the things. Addition of microbial inoculants. हम क्या करते हैं कि माइक्रोबियल कंसोर्टिया या उसके अलावा स्पेसिफिक स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग जो है वो इंसर्ट करते हैं या इनोक्यूलेट करते हैं, ताकि हम जो टारगेटेड पॉल्यूटेंट है उनको डिग्रेड कर सकें. सो दैट्स अबाउट दिस. एंड initial was the selection, optimization, inoculation. There were the protocols how we can do this. Now it is the process, how we can do this. What is the things in what are the things that take place while doing so. Firstly, there is a monitoring and management. I have said this thing in multiple times before. Monitoring, there is a proper surveillance, there should be proper check and balance, there is a regular monitoring system, because we know that excess of everything is bad.
So parameters of temperature, moisture, microbial activities, and multiple other things, they have to taken side by side. There should be check and balance, proper check and balance to ensure the optimal condition for the bioremediation. Second thing is the maturation. सबसे पहले क्या होता है कि हमने मॉनिटरिंग की, मैनेजमेंट की, कंपोस्ट बनाया, कंपोस्ट का प्रोसेस हुआ, कंपोस्ट का प्रोसेस जैसे कंप्लीट हुआ, क्या हुआ कि हमने देखना है कि पॉल्यूटेंट कितनी अमाउंट में डिग्रेड हो चुका है, आया कि वो डिग्रेड हुआ भी है कि नहीं, ठीक है, साथ साथ सर्वेलेंस भी चलती रहती है। आया कि हमने कितना टेम्परेचर बायोरेमेडिएशन के लिए उसको प्रोवाइड किया है, कितनी माइक्रोबियल एक्टिविटी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, या हम टेम्परेचर या मॉइस्चर कितना हमने उसको, या पीएच कितनी उसको दी है कि उसका जो है फंक्शन नॉर्मल हो रहा है। अब क्या होगा कि जब हमने कंपोस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद हमने जब उसके पॉल्यूटेंट को इतना डिग्रेड कर लिया कि हमारे लिए काफी हो चुका है, फिर हम क्या करते हैं कि कंपोस्ट होता है एज अ रिजल्ट, जब इतनी हद तक पॉल्यूटेंट को जो है वो डिटॉक्सिफाई कर चुका होता है और हमारे पास बहुत सारी चीज एक डिग्रेडेड फॉर्म में मिल जाती है, तो हम उसको नाम देते हैं, उस कंपोस्ट को नाम देते हैं एक फेज का, जिसको कहते हैं मैचुरेशन फेज। इसमें क्या होता है कि कंपोस्ट जो है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ चला जाता है, और फर्दर जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर रह गया है, जो भी डिग्रेडेशन रह गई है, उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। Here we can see the picture of how the compost side, multiple things are taken side by side. Bioremediation through biopile. Firstly, we have talked about the how compositing is being done. You know, there are multiple things that we have discussed. Now, second thing is how we can use the biopile. Before discussing um, bioremediation through biopile, we must be able to know about what is biopile. So basically, biopile is what? It is the bioremediation technology in which excavated soil are mixed with the soil amendment formed in compost piles and enclosed for treatment. So basically what they are trying to say, it is a biological bioremediational technology where that's all about the mixing of the excavated soil with the soil amendment. And ultimately we're using that soil for the purpose of degradation, for the purpose of bioremediation, for the purpose of converting all of the complex molecules to the simpler one, you can say in either word, into less toxic substances in order to detoxifying the contaminants. Here the same process is being done. The moisture, heat, oxygen content, pH, we have to do all these things in a controlled, precise manner so that we may enhance the biodegradation. It is a soil monitoring temperatures. It is the visual representation of biopile remediation process. Firstly, what we have to do before doing anything, there must be site preparation. Then there is a mixing and conditioning. In mixing and conditioning, the excavated soil, it is mixed with the amendments to create the optimal temperature, to create the optimal environment for the process of bioremediation, for the process of TNT degradation. For that purpose, common amendment that we use are nitrogen, phosphorus, fertilizer, compost, sawdust, other carbon-rich material, essential nutrients to enhance the biodegradation process. So this is all about the conditioning. Again, there is an inoculation, but how we can inoculate, how we insert. Indigenous microorganisms capable of degrading TNT may already present in the contaminated soil. So these microorganisms, they convert the in TNT into the less toxic substances. Bioremediation, in order to accelerate the process, TNT degradation, degrading bacteria, they are added to the biopile, right? कि सबसे पहले अगर हमने इस प्रोसेस को पूरे के पूरे प्रोसेस को बढ़ाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास TNT डिग्रेडिंग बैक्टीरिया है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग हमारी बायोपाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि हम TNT को फर्दर डिग्रेड कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली हम जानते हैं कि 2001 में
ये बात कह दी गई थी कि ये जो है बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंसेस है और इनको खत्म करना हमारी प्रायोरिटी है. सो एट आर ऑन least cost or the more cost we have, what we have to do, we have to degrade the TNT. This is the moisture and aeration system. In aeration system what we have to do, the perforated के सुराखदार पाइपां में पाए जाते हैं, ब्लोवर्स पाए जाते हैं. इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास कंटिन्यू, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और रेडिएशन होनी जरूरी है और एरोबिक रेस्पिरेशन इज देयर. तो क्या होता है कि इनके अंदर परफोरेटेड पाइप, जब ब्लोवर्स जो है इनके अंदर ब्लोवर्स पाए जाते हैं ताकि हमारे पास जो ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है उसको यकीनी बनाया जाए और डिग्रेडेशन के प्रोसेस को जितना हो सके उतना इनहेंस किया जाए. फिर टेम्परेचर की कंट्रोल होना चाहिए, फिर मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए. ऐसा ना हो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत कम रह जाए, बहुत ज्यादा कोल्डर क्लाइमेट जो है वो कंडीशन आ जाए. देयर शुड बी एन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एवरीथिंग. Then there is a monitoring system. In monitoring system, we can also encompass the term temperature as well, but again, they have just excluded that term. pH, TNT concentration, the use of microorganism, TNT, degrading bacteria, oxygen level. We all have to we all have to consider all this thing in a wholesome way. This is a treatment duration. इसके अंदर क्या होता है कि सारे का सारा जितना भी ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होता है ये चंद महीनों से कुछ सालों तक जो है वो इसके प्रोसेस को हम लोग कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी यू नो इफ वी हैव डन everything is being done. Now what we have to do, we are not going to leave it. There is a post treatment analysis. For the process of post treatment analysis, there is a regulatory limits. एक रेगुलेटरी लिमिट्स होती हैं. हमने देखना है कि टीएनटी, इस बात को कंफर्म करना है कि आया कि जो एवेलुएट करना है कि टीएनटी का जो इफेक्टिवनेस है रेमिडिएशन की, या उसको कंफर्म करना है कि आया कि वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है कि नहीं, आया कि टीएनटी डिग्रेड हो चुका है कि नहीं. So what we have to do for this purpose is the again the monitoring and surveillance. जितने भी हमने प्रोसेस किए, दैट वाज बायोकम्पोजिटिंग, बायोपाइलिंग, बायो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोरेमिडिएशन. तो उनके एडवांटेज और नुकसान क्या हैं, यानी उनके फवायद और नुकसान क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस तो ये हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक बेस्ट तरीका है कि नेचुरल बैलेंस को मेंटेन रखते हैं. उसके साथ साथ ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, ये कोस्ट इफेक्टिव है, इनके अंदर वर्सेटिलिटी पाई जाती है. दैट इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट दैट. ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है. ये तो हो गए इनके एडवांटेजेस, इनको इस तरह से यूज किया जाता है. अब वो प्रोसेस जो हम लोग यूज करें उनके नुकसान क्या हैं. एक तो हमें अपने इसके लिए प्रॉपर टाइम इसको चाहिए होता है. जैसे मैंने पहले बताया कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, प्रॉपर चेक इन बैलेंस है, प्रॉपर सर्विलेंस है. इसके फिर मैथ इफेक्ट को देखना है, इसके पोस्ट एनालिसिस करना कि क्या चीजें हो चुकी है और क्या आगे नेक्स्ट दे आर अबाउट टू कम. वी हैव टू प्रिपेयर द प्लान्स फॉर दैट कि ये अगर हो जाए तो क्या करना है. तो इट इज बेसिकली द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. मॉनिटरिंग सिस्टम इज देयर, वेरिफिकेशन इज देयर. और उसके अलावा ये है कि हम इसको चंद एक जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आएगा कि इसके अंदर कुछ प्लांट ऐसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो बहुत लिमिटेड होती हैं, उनकी लिमिटेड एप्लीकेशन होती है, उनको उन्हीं जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है और साइट स्पेसिफिक हैं. तो ये इनमें जो है वो एक चीज आ जाती है. सो दैट्स व्हाई दे आर they have disadvantages effect. Then how we can use the plant for the degradation of the pollutants from our environment, for the degradation of the TNT waste from our environment by using the plant. That is all about, comes in definition of phytoremediation. Phyto mean plant and remediation mean to convert the toxic substance into less toxic substances. So here we will be using the plant to remove the pollutants from the contaminated soil, water, air. They are effective and they are approachable, so we can use it in a very perfect way. Firstly, the plant that we use here is the Indian mustard, Brassica junica.
इन सब का प्लांट्स का मैं एक ही बार में नाम ले देती हूँ, और इनका तरीका कार या इनका लाही अमल जो जिस तरीके को ये फॉलो करते हैं, नेचुरल फिनोमिना, स्ट्रेंज हैपनिंग, कुदरती तौर पर ये जो क्या अपने काम करते हैं, तो इनका होता क्या है वो मैं आपको एक बार में बता दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट यूज करते हैं दैट इज इंडियन मस्टर्ड, सेकंड इज अ वाइट क्लोवर, thirdly it is switch grass, fourthly is the tall fescue, fifth is sunflower, sixth is the willows. So these are the plants that is used for the process of phytoremediation, that are used for the process of TNT waste, for the bioremediation of the TNT waste, for the remediation of the TNT waste. So what the process is, here we can see the process is, what do the plant do to degrade the TNT? Basically, what happens, there are planting specific plant species like पॉपुलर ट्री, विलो, जैसे मैंने पहले आपको नाम बताया, वो क्या करते हैं कि इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये टीएनटी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि ये सॉइल के अंदर पाया जाता है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है, बट द इजियर वे क्या है कि ये सॉइल के अंदर चूंकि पाया जाता है, तो होता क्या है कि ये अपने रूट्स के थ्रू इनको इनटेक करते हैं। फिर क्या होता है कि ये टीएनटी को अब्सॉर्ब करते हैं। अब्सॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, इनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है, नेचर ने इनके अंदर इतनी एबिलिटी पाई जो है वो रखी है कि इनको ब्रेक कर देते हैं, इनके अंदर ब्रेक डाउन का फिनोमिना होता है। अब टीएनटी इनके अंदर जो है वो अब्सॉर्ब हुआ, फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया शूट और लीव्स की तरफ। ऑब्वियसली वहां पर भी एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि उन जितने भी प्लांट, जैसे मैंने आपको जितने भी 6 प्लांट्स के नाम गिनवाए हैं, वो 6 प्लांट 6 के 6 प्लांट देर स्पेसिफाइड फॉर दैट थिंग। वो क्या करते हैं कि वो टीएनटी को अब्सॉर्ब करते हैं थ्रू द रूट्स, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं अपनी शूट्स और लीव की तरफ। अब उन शूट्स और लीव्स के अंदर पाए जाते हैं हमारे पास एंजाइम्स, और वो एंजाइम क्या करते हैं कि उनको उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, इनको डिग्रेड करते हैं, और उनको जो है वो लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को हम नाम देते हैं जी फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन का। उसके अलावा फाइटो स्टेबलाइजेशन की टर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं। फाइटो स्टेबलाइजेशन जो है बेसिकली ये सोइल से टीएनटी को रिमूव करना विद द हेल्प ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज अ फाइटोस्टेबलाइजेशन। प्लांट कैन आल्सो रिमूव टीएनटी फ्रॉम द सोइल थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फाइटोस्टेबलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि